गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वल्नरेबिलिटी टू ड्राउट्स। तो ये आपका एक इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, वहाँ पर ड्रॉट इन नंबर्स नाम की रिपोर्ट रखी गई है। तो उसकी 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ चल रही है आपके कोटे डेवोरे में। तो उस में जो है ये आंकड़े रखे गए हैं कुछ। तो ये एक तरह से रिपोर्ट में कलेक्शन किया गया है पिछले 122 साल का, कि 196 कंट्रीज़ में क्या जो है ड्रॉट का सिचुएशन रही है, उससे क्या इम्पैक्ट आया है लाइफ और लाइवलीहुड पे। तो आज जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अबिजान जो आपका कोटे डेवोरे में है अफ्रीका में, वहाँ पर 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ चल रही है UNCCD की। तो उसमें ये डेटा रखा गया है। UNCCD क्या है? आपका UN की एजेंसी है। ये सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि आपके रियो कॉन्फ्रेंस से निकली थी। आपके जो ड्राई लैंड्स हैं, खासकर उनको, उन इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए ये कन्वेंशन जो है वो बनाया गया है। ठीक है। अब जो है COP15, अब ये COP15 जो है लैंड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, इन सब के बारे में बात कर रही है। फोकस इसका ये है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन को, ड्रॉट को, डेजर्टिफिकेशन का हम क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। इंडिया ने भी अपना स्टैंड उस मीटिंग में क्लियर किया है कि हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फार्मर्स को, 229 मिलियन सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिससे 8 से 10% जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम हुआ है। इंडिया ने बोला है कि जो है कोविड-19 के वजह से ग्लोबल वार्मिंग की जो फाइट थी उस पर थोड़ा जो है वो प्रेशर आया है, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज जो है हमें कोविड से डील करने में लग गए, तो हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये जो रिपोर्ट है, इसमें इसने क्या बताया है? तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि 15% ऑफ जो टोटल नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उसमें 15% जो है आपके ड्रॉट आती है, ड्रॉट कवर करती है। और 29% इंक्रीज़ देखने को मिला है ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में। अफ्रीका सबसे वर्स्ट हिट है। टोटल 3.6 बिलियन पीपल जो वर्ल्ड में है वो वाटर स्कार्स रीजन्स में इस टाइम पर रह रहे हैं। उन्होंने बोला है कि UNCCD की जो सेकंड ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है, लगभग साउथ अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट जितना जो लैंड है वो डिग्रेड होने वाला है अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो। इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग भी दी है। उन्होंने बोला कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया है इंडिया में, वो 57% इंक्रीज़ हुआ है 1997 से। 1/3 जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं वो मोर देन 4 ड्रॉट्स जो है वो विटनेस कर चुके हैं। सब सहारन अफ्रीका जैसी लेवल की इंडिया की ड्रॉट वल्नरेबिलिटी है, मतलब इतनी ज़्यादा ड्रॉट आ सकती है इंडिया में। शॉर्ट लिव्ड है जो है आपकी फ्लैश ड्रॉट्स के बारे में भी उन्होंने बताया कि इंडिया में फ्लैश ड्रॉट्स की भी जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है। फ्लैश ड्रॉट्स क्या होती है? जो शॉर्ट लिव्ड तो होती हैं, लेकिन वो सिवियर डैमेज करके जाती हैं, सॉइल मॉइस्चर जो है वो कम्प्लीटली डिप्लीट कर देती हैं। तो ये सिचुएशन हमारे कंट्री में बनने का खतरा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक और इन्वायरमेंट से ही टॉपिक है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। तो ये आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने बोला है कि 2021 जो साल था उसमें ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, राइज इन सी लेवल, ओशन हीट और ओशन एसिडिफिकेशन, चारों क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर जो है वो सबसे जो है वो वर्स्ट परफॉर्म किया है। उन्होंने न्यू रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो उन्होंने पिछले 7 साल का आंकड़ा देते हुए कहा है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है हमारे पिछले 7 साल में, हाँ, अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ कोर्स। और उन्होंने बोला है कि 50% चांस है कि जो है ग्लोबली हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो हमारा टारगेट है उसको हम जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। साल 2021 जो है वो ला नीना का ईयर था, इसलिए जो वार्मिंग थी वो थोड़ी कम थी, फिर भी जो है रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है वो देखने को मिले। सोचो अगर ला नीना ना होता तो कितना ज़्यादा आपको वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता। ग्लोबल मीन सी लेवल राइज जो है 4.5 mm देखने को मिला है 2013 से 21 के बीच में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आइस मास का लॉस देखने को मिला है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से $100 बिलियन तक का नुकसान जो है वो 2021 में हमको देखने को मिला है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी 192 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज़ को कवर करती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअल में ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1873 की वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस में बनाई गई थी, लेकिन 1950 में इसको WMO बना दिया गया कन्वेंशन, और जो है इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में लोकेटेड है।
नेक्स्ट टॉपिक आपका है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का टॉपिक है ऑफ कोर्स। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जो एजी पेरारी विलन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में कन्विक्ट थे, उनको रिलीज़ किया है। तो अब उन्होंने बोला कि जो गवर्नर है उन्होंने अपने आर्टिकल 161 में जो है उसका इस्तेमाल सही से नहीं किया है, इनऑर्डिनेट डिले किया है, इसीलिए आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन को रिलीज़ कर दिया है। उन्होंने ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 161 जो गवर्नर की पावर है वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। तो 142 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या है? ऑफ कोर्स कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। उन्होंने कहा था कि जो लोग डिले इन जस्टिस से सफ़र करेंगे उनको जो है एक तरह से क्वेटस मतलब सूदिंग इफेक्ट देने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रहे हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस करे। ठीक है, तो इसके अंदर 3 तरह की पावर्स होती हैं ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो अटेंडेंस ऑफ पर्सन सिक्योर कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह के मंगवा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ के लिए भी वो इन्वेस्टिगेट और पनिश भी कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो आपके जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिपोर्ट एक सबमिट की है प्राइम मिनिस्टर को, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, और इसको EAC to PM और इंस्टीट्यूट फॉर कंपैटिटिवनेस ने इसको प्रिपेयर किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब हम जो है इनइक्वालिटी को जो मेजर करते हैं सिर्फ हम वेल्थ कंसंट्रेशन से मेजर ना करें, उसके लिए अलग और वेरिएबल्स हैं उनको भी हम कंसिडर किया करें, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड्स। फिर उन्होंने बोला है कि इनकम जो वेल्थ कंसंट्रेशन तो बढ़ी है, लेकिन हमको ये देखने को मिला है कि जो ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो भी कंसंट्रेटेड हमको देखने को मिले हैं, कि कुछ लोगों को ही जो है ग्रोथ के जो है वो बेनिफिट्स मिले हैं। फिर उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे ये तो आपको बेसिक आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे कि लेबर पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, एनरोलमेंट रेशियो ठीक हो रही है। अब वेल्थ कंसंट्रेशन जो है वो वर्स हुई है, ये इसके बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं कि 4% जो वेल्थ कंसंट्रेशन जो है अर्बन एरियाज़ में वो हाईएस्ट क्वांटाइल में है। टॉप 1% जो लोग हैं वो 6 से 7% ऑफ टोटल इनकम्स को अर्न कर रहे हैं। नीचे फिर कुछ आंकड़े जो है वो आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको ऑफ कोर्स मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं, तो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कुछ अपनी अचीवमेंट्स बताई है इस रिपोर्ट में कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.8% रहा है, स्टंटिंग जो है वो चिल्ड्रन में कम हो रही है, एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर रहेगा अगर आपको इनइक्वालिटी से डील करना है तो। ठीक है, फिर रिकमेंडेशंस क्या दिए उन्होंने कि कैसे हम ये वेल्थ कंसंट्रेशन और इनइक्वालिटी को से डील कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि अर्बन लेवल पर एक गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाओ, जैसे कि मनरेगा रूरल लेवल पर चलता है। फिर उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी लेके आई जा सकती है, जिससे कि इनकम गैप्स जो है वो रिड्यूस किए जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है अपना सोशल सर्विसेज और सोशल सेक्टर के ऊपर करना चाहिए, ताकि जो है आपकी जो इनइक्वालिटी है उसको कॉम्बैट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लुम्बिनी। तो आपको पता है कि PM मोदी जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ फाउंडेशन स्टोन रखने गए थे इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का लुम्बिनी में। तो हमको देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है लुम्बिनी का, तो इसलिए ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बर्थ प्लेस है सिद्धार्थ गौतम, जो आपके गौतम बुद्ध है उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी। यहाँ पर प्रदिमोक्ष वन भी है जिसको आप लुम्बिनी गार्डन कहते हैं। ठीक है, इसको किंग अंजना ने बनाया था, जो कि कोलिया क्लैन के किंग थे। उन्हीं की जो है बेटी थी वो माया देवी थी। माया देवी जो है वो आपके गौतम बुद्ध की मदर है। ठीक है, लुम्बिनी जो है वो आपके एंशियंट ट्रेड रूट पर जो है वो लोकेटेड था। कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, ये सारे इसी एंशियंट ट्रेड रूट पर ये सिटीज़ लोकेटेड थी। अब इसका अशोका के साथ कनेक्शन क्या है? तो 3rd सेंचुरी BC जो है वो उस टाइम पर लुम्बिनी और बुद्धिज़्म का वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पर जो है अशोका ने कलिंग वॉर जीतने के बाद, बुद्धिज़्म अपनाने के बाद, यहाँ पर एक लार्ज टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बनाया टू कमेमोरेट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, और यहाँ पर एक सैंडस्टोन पिलर को भी उन्होंने जो है वो इरेक्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अमरनाथ यात्रा जो है अभी
उससे उसमें लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने पिलग्रिम्स जाएंगे उनको आप RFID टैग्स लगाए जाएंगे ताकि उनकी वायरलेस ट्रैकिंग की जा सके। ठीक है, तो वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम होता है RFID टैग्स और रीडर्स होते हैं इसमें, आपको पता ही है। जैसे आपका फास्ट टैग होता है वो भी RFID पे ही फंक्शन करता है। तो इसमें कम्युनिकेशन की जा सकती है, इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, सीरियल नंबर्स होते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, हाई मेमोरी टैग्स भी होते हैं इसके अंदर। दो तरह के RFID टैग होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में होता है कि उसकी खुद की पावर सोर्स होती है, मोस्टली बैटरी पावर्ड होते हैं वो RFID टैग। तो एक इसमें आपको, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि टैग और रीडर, तो जो आपके मोबाइल, आपके जो कार पे या आपके जो फास्ट टैग लगा होता है वो होता है टैग। ठीक है, तो टैग लगा होता है, जब आप कहीं टोल पर जाते हो तो वहाँ पर रीडर लगा होता है, वो रीडर आपके टैग को रीड कर लेता है, तो उस वे में वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो एक्टिव रीडर, एक्टिव RFID और पैसिव RFID। तो जो आपका फास्ट टैग है वो आपका पैसिव है। ठीक है, तो उसमें आपकी जो फास्ट टैग है उसमें कोई पावर सोर्स तो नहीं है ना। ठीक है, वो एक्टिव RFID में पावर सोर्स उसका खुद का होता है, मोस्टली बैटरी पावर्ड होता है वो। पैसिव RFID जो है वो रीडर के थ्रू ही जो है वो एक्टिवेट होता है। आपका जो फास्ट टैग है उसमें खुद पे कोई पावर नहीं है, लेकिन जब आपका टोल पर नाके पर जाओगे तो जो उसमें रीडर है उसके पास जो पावर है उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेला टनल प्रोजेक्ट। तो ये स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सेला टनल प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। वो बस लगभग कंप्लीट होने वाला है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिक्योरिटी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, एक ऑल्टरनेट दे रहा है हमको सेला पास का। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रही है इस प्रोजेक्ट को। इसकी जो लिंक रोड होगी इस टनल की वो लगभग 1200 मीटर की होगी, मतलब लगभग 1.2 किलोमीटर की होगी। और ये सेला टनल जो है ये आपकी 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए आपके LAC जो है आपकी चाइना के साथ वहाँ पर। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is vulnerability to droughts. So according to a report, Drought in Numbers 2022, this report has been presented to the 15th Conference of Parties of United Nations Convention to Combat Desertification. So this report is basically collecting the data of 122 years, covering 196 countries, regarding the effect of droughts in these areas. Okay, so this report has been submitted to the 15th Conference of Parties, which is undergoing at Abidjan, that is in Cote d'Ivoire. This is a country in Africa. Okay, so you have to find it in your map also, and you can locate this Cote d'Ivoire and near the nearby countries also. Okay, regarding with which countries this Cote d'Ivoire shares its border with. Does it share a border with any sea or not? Okay, where is it located? So all that you have to see, because your prelims exam is near and this place is in the news now. So about the UNCCD. So UNCCD is a sole legally binding treaty. It emerged from the Rio Conference Agenda 21, and it addresses concerns about the dry lands, that is the arid, semi-arid and dry subhumid areas, and it is focusing upon most vulnerable ecosystems and peoples who are living in these areas. So in India, the Ministry of Environment is the nodal ministry for this convention, and this COP 15, the UNCCD is focusing upon desertification, land degradation and drought, and the focus is more upon land rights, gender equality and youth empowerment. Okay, so what India has made it clear is in this COP 15 is that we are on the cusp of a transformationary period where the fight against global warming has been hampered, because we had to divert our focus and our resources to fighting COVID-19, whereas this global warming has been increasing, but we had to disproportionately focus upon this COVID-19, and we had to divert our focus and our funds to COVID-19. So India has also said that we have issued about 229 million soil health cards,
So we were able to see a decline of about 8 to 10% of chemical fertilizer use in the country. And that's why it has also outlined that we have also launched rural livelihood programs uh, uh, prevent land degradation. Okay. So what this report has found out is that about 15% of our natural disasters consist of droughts. There has been a 29% increase in the frequency of droughts. Africa is the worst hit continent in this with drought. 3.6 billion people are living in water scarce regions. 16 million square kilometers of land will be degraded if the current trends continue, which will be about the size of South America. So India specific findings are also there. Drought prone area in India has increased by 57% since 1997. One third of India's districts have experienced more than 4 droughts. About 50 million people each year are affected by drought. The drought vulnerability in India is similar to, or somewhat similar to, sub-Saharan Africa. Okay, so we are also being targeted by flash droughts. So flash droughts are a phenomena where where the drought is very short lived, but it has severe effect, where the soil moisture is completely depleted. So even though the drought may be short, but its effect lasts for a very long period. Okay, so the next topic is state of climate report. This is also a topic for your environment section. So in the recently released state of climate report, the WMO has said that the 4 key climate change indicators, greenhouse house concentrations, rise in sea level, ocean heat, and ocean acidification, all four have set new records in 2021, despite 2021 being the La Nina year. So despite that, the warming continued at the highest level. So the last 7 years have been the warmest years on record, and the average global temperature last year was about 1 degree Celsius above the pre-industrial level. So that's why if the trends continue within the next 5 years, we could see that there will be 50% chance of temporarily exceeding 1.5 degrees Celsius of temperature above the pre-industrial level. Okay, so 2021 has also seen an average of 4.55 mm of per year. I'm sorry, 4.5 mm per year. Global mean sea level temperature, global mean sea level has increased over the last 2000, I think 8 years period, 2013 to 2021 period. So why is it happening? Because of accelerating loss of ice mass. Okay, similarly, extreme with weather events have costed more about $100 billion to the world in the last year. About the World Meteorological Organization, it's an intergovernmental organization. 192 member states and territories are the members of this organization. It emerged from the International Meteorological Organization, which was established after the 1873 Vienna International Meteorological Congress. It was later converted into World Meteorological Organization after the convention was ratified on 23rd March of 1950. Okay, so it is headquartered in Geneva, that is in Switzerland. So the next topic is of your polity section. Article 142 of the Constitution. Supreme Court has invoked its extraordinary powers under this article to do complete justice to the release of AG Pereiravallan, who is who is a convict in the case of Prime Minister Rajiv Gandhi assassination case. So Supreme Court has ordered the release of Pereiravallan because the Supreme Court said that under Article 161, the governor has made inordinate delays, and that's why Article 161 is also under subject to judicial review. So what is 142? So under Article 142, the Supreme Court has been given the power to do complete justice. So it extends itself to be a quietus, that is, it can give a soothing effect to a dispute in case the Supreme Court believes that the
there has been delay or in getting necessary reliefs to the disadvantaged person. Okay, so for that the constitutional makers gave the Supreme Court powers under Article 142 of the Constitution. So the three different powers have been given. First is, of course, it can secure the attendance of any persons before it. Second is the discovery and production of any documents, and the third is regarding the contempt of itself. Okay. The next topic is state of inequality in India. So a report, of course, this topic is for your economy section and social issues also. So a report called State of Inequality in India has been released by Economic Advisory Council to the Prime Minister, and this report has been prepared by Institute for Competitiveness. So this report is saying that when we are measuring wealth concentration, we have to move beyond, when we are measuring inequality, we have to move beyond just wealth concentration. We have to look at other dynamics also, like income distribution and purchasing power of the households. And it has also accepted that, of course, there has been growth, but the benefits of that growth have largely remained concentrated. It has also said that 4% wealth concentration in the highest quintile in urban areas is contrasted with just 7.1% concentration that of in rural India. Top 1% of people have 6 to 7% of the total incomes earned. So basically, these statistics are given. You can read them yourself also. Unemployment rate is given here. Stunting in children has gone down. So all these statistics are given, which will of course not be important for your prelims exam but for your mains exam. So it has also said that education and cognitive development can help in combating inequality. It can work as a corrective measure for inequality. So there are several recommendations also. It has said that a guaranteed employment program must be launched for the urban unemployed, like on the lines of Manrega. It has also suggested that a universal basic income program can be introduced to reduce income gaps. It has also asked the government to allocate more percentage of the expenditure towards social services and the social sector. So the next topic is for your art and culture section. Lumbini. Lumbini, of course, you know that PM Modi has recently gone there. So what is the historical significance of Lumbini? Of course, it is the birthplace of Siddharth Gautam, that is the Gautam Buddha. There is Lumbini Garden there, which is of course called the Pradi Mokshvan. It was built by Anjana, who is the king of Kauliya clan, and he had a matrimonial. This Kauliya clan had a matrimonial alliance with Shakya clan of Kapilavastu, and they jointly managed this garden. Maya Devi, the mother of Gautam Buddha, was the daughter of King Anjana, and she was married to Shakya king Sudodana. Okay, so Lumbini is located on the ancient trade route of Kapilavastu, Kushinagar, Vaishali, Patliputra, Nalanda, and Rajgriha. What is the connection of Ashoka with Lumbini? Of course, when he won the Kalinga War, he went there and to Lumbini in 249 BC, and he built a large temple-like structure there over the birthplace of Buddha, and he also erected a sandstone pillar there. Okay, so to commemorate his pilgrimage. What is now the next topic is radio frequency identification. So recently a high level security review was conducted for the Amarnath Yatra, and it has been decided that all pilgrims will be given the RFID tags. So basically RFID is a wireless tracking system. You use tags and readers to communicate with each other. You like your FASTag is a tag, and when you go to a toll booth, it has a reader. It reads from your tag, and that's how they communicate. Okay, so these are basically radio waves which are used to communicate information or identity of the objects. So it contains encrypted information, serial numbers, or even short description. They are high memory tags also. There are two kinds of RFID tags. The first one is of course active RFID tags, and the second one is passive RFID tags. So your FASTag is your passive RFID tags, because your tag is not containing any electric source or power source. It is merely using the electromagnetic energy of the reader, which is located on the toll booth, and your tag is getting activated only when
it reaches near the reader. Okay, so active RFIDs, they have their own tags, also have their own power source, so that's why they can have a longer range, around 300 feet, compared to passive tags. So the next topic is Sela Tunnel project. So the Sela Tunnel project, which is located in Arunachal Pradesh, is near its completion. It is located in the West Kameng district of Arunachal Pradesh. It will provide an alternative access to the Sela Pass, and it is being constructed by the Borders Road Organization. The link road between these two tunnels will be about 1200 meters. And the significance of Sela Tunnel is that it will be above 13,000 feet, and it will provide all weather connectivity to the line of actual control with China. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.